60. Now, yesterday I told you what is the method of solving it. The question is check which of the following are equivalent. So you have to reduce both the number. Okay? You have to write these two number in their standard form first. के standard form में हम पहले convert कर देंगे. ये first number है. Now see what will be the HCF of both this number. Just calculate if you don't know. 12 ones are 12 and 3. Now write 12 here. 3 fours are 12. So here HCF is 3. So you need to divide both the numerator and denominator by 3 and the answer you will get 4 upon 5. And here is minus sign, that's why the numerator will be minus 4. Now what about this 36 upon minus 60? Again you need to calculate the HCF of both the numbers. So I will take 36 ones are 36 because if I take 2 times then it will be greater than 60. Now subtract 4, 5 minus 3, 2. Again write 1 time, then here 2 and here 1. So accordingly he got the HCF 12. So your HCF is 12. Now divide this number by 12. What is the answer? 12 3s are 36, 12 5s are 40. But the denominator is in negative. Now you just need to convert this denominator, negative denominator sign, this sign जो कि नेगेटिव है आपको न्यूमरेटर में करना है. For that you need to multiply by minus 1. So here minus 3 and minus minus plus. So this become positive. Now the first number, that is 12 upon 15, has become minus 4 upon 5, and this the second number 36 upon minus 60 has become minus 3 upon 5. Now compare the number. Are these two numbers equal? No, these are not equal. So we can say they are not equivalent. इस क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं. हमारे फर्स्ट पार्ट जो हमने कल सॉल्व किया था उसमें दोनों ही नंबर रिड्यूस करने के बाद सेम आए. बट हियर टुडे वी हैव सॉल्व द बी पार्ट एंड वी हैव रिड्यूस बोथ द नंबर, और हमने इस दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया. बट जो भी हमें आंसर मिले, जो भी हमें रिजल्टेंट नंबर मिले वो सेम नहीं थे. तो इसी वजह से ये इक्विवेलेंट नहीं कहलाएंगे. ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट. Here C part is minus 5 upon 11 and minus 15 upon 33. Now see, first number is already in reduced form, so no need to convert it. Okay. Now the second one is minus 15 upon minus 33. So here you can divide this with their HCF, and their HCF will be 3 only. 3 5s are 15 and 3 11s are. But as one number is negative, so your answer will be in negative. Here also negative one number, so 11 will also be negative. But you can change both the numbers. We can't say change both the numbers because here denominator is negative. आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, और उसके लिए आप माइनस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आपको क्या मिल जाएगा, 5 ones are 5 and here 11 ones are 11. So minus minus will become positive. Here also minus minus positive. So now your resultant numbers are minus 5 upon 11 and 5 upon 11. Are these two numbers equal? No, these are not equal because this is negative number and this is positive. So this one is greater. So you will say they are not equivalent. Simple. So we have done question number 5. Let's start question number 6.
what is given, which of the two rational number is greater in the given part. So how you will solve these kind of question? See student, there are two method of solving these type of question. फर्स्ट मेथड, आप एलसीएम लेके इन दोनों के जो भी आपको दो नंबर्स गिवन हैं डिनोमिनेटर को पहले इक्वल कर सकते हैं, फिर कंपैरिजन कर सकते हैं. बट अनदर मेथड इज टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दे आर आस्किंग विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर. लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट. ए पार्ट इज वेरी सिंपल. वी ऑल नो 9 by 14 is positive number and it must be on the right side of the 0. If you see the number line, 0 is here and on the right hand side are the all the positive number lie, you know, okay, and so on. But on left hand side all the negative numbers are there, and we know all the number which are on the right side of 0, ठीक है, वो 0 से कैसे होंगे? ग्रेटर. क्लियर? ये सारे नंबर 0 से ग्रेटर होंगे. बट ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर. ठीक है, स्मॉलर होंगे किससे? 0 से. मीन्स 0 is greater than these negative numbers. Now you can see here this number is positive and 0 is given. So you can, without calculation, you can say 9 upon 14 is greater than 0. So how you will write the answer? We know all the positive numbers are greater than 0. So 9 upon 14 is greater than what? Than 0. Now come to the B part. Here this number is negative and 0 is given. As I told you that all the negative numbers, जितने भी negatives number होते हैं वो 0 से smaller होते हैं. तो इस two numbers में आपका greater number कौन सा होगा? 0. Now you will write 0 is greater than minus 3 upon 11. Now come to the C part. Here denominator are same. Now compare the numerator, minus 3 and 1. We know that all the negative numbers are smaller than positive 1. So here this number, the positive number 1 upon 4 is greater than minus 3 upon 4. Clear? These questions are very easy, means this part, okay, A, B, C. Now come to this part. अब ये डिस्कस करते हैं हम, जब हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे या दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे. इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स स्टार्ट विद D part. -1 by 2 and the second number is 1. Now here is denominator 2 but here is no denominator, so you can make denominator 1. Now what you will do, these type of question can be done in two ways. First, make the denominator equal. For that, calculate the LCM of both the denominator. So here is 2 and 1 numbers are given, so their LCM will be 2 only. How you will calculate LCM? देखिए, like this. 1 ones are 1 2, 2 ones are. So in this way 2 ones are 2. Your LCM will be 2 only. Now your second step, make this first number. Its denominator is already 2, so no need to convert it. आपको सेकेंड नंबर को कन्वर्ट करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1. फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर 2 you need to multiply the denominator by 2, and if you are multiplying the denominator you need to multiply the numerator also. So in this way you will get minus 2 upon 2. So now compare both the numbers. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब कंपेयर करिए, -1 will be greater or -2?
we all know all the smaller digit in negative numbers are greater than the bigger digit. So this one is the greater. Clear? क्योंकि -1 अगर हम नंबर लाइन की बात करें, see here is 0 and here are all the positive numbers. जैसे हम राइट हैंड साइड मूव करते जाएंगे तो हमारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं. एंड जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ पे -1 आएगा, -2. अब हम -2 के राइट हैंड पे जाते हैं तो हमें इंक्रीज वाला नंबर मिलेगा. सो दैट्स वाई -1 is greater than -2. Clear? Now come to the C part, not C part. We have already done 4 part. Come to the E part. -9 upon 7 -6 upon 7. Now see, here both the denominator are equal. You need to compare only the numerator. Now you can easily tell me which one is greater. As I told you, the smaller digit in negative number, इसमें देखिए digit 6 है, 9 से छोटी है. तो जितने भी नेगेटिव्स नंबर होते हैं आपके, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, उसमें जितनी छोटी डिजिट होगी दूसरे नंबर से, जैसे 9 से छोटी है, वो ही आपका नंबर ग्रेटर होगा. अगर हम नंबर लाइन की बात करें, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ बेटा. यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 1 2 3. राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर देयर. तो जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो सारे कैसे होंगे, राइट हैंड साइड से छोटे. तो ये जो -6 है ये राइट हैंड साइड आएगा किसके, -9 के. दैट्स वाई -6 इज ग्रेटर. सो इन दिस वे -9 upon 7 is smaller than -6 upon 7. So your answer will be -6 upon 7 is greater than -9 upon 7. Now come to F part, 5 upon 6, 6 upon 9. Now here denominator is 6 and here is 9. So you need to make the denominator equal. For that you need to calculate the LCM of both 6 and 9. अभी हम LCM कैलकुलेट करते हैं 6 9 का. सो स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा इसका, 2. 2 3 is 6, but 9 is not divisible by 2. But you need to bring it down. Okay, हम इसको नीचे सेम ऐसे ही लिख देंगे. Now take another factor, that is 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9. Again both this number, or I can say 3, will be divisible by 3 only. So now we got the question 1. हमें कब तक ये कंटिन्यू करना है बेटा, जब तक हमारे जो क्वेश्चन नीचे जो भी आ रहा है आपका 1 नहीं आ जाता. अब हमारा 1 आ गया. वी गॉट द फैक्टर्स. नाउ मल्टीप्लाई दीज. 2 3s are 6, 6 3s are 18. So your LCM is 18 now. Now what is the next step to make this denominator equal to the LCM? ठीक है, ध्यान से सुनना. ये जो आपके डिनोमिनेटर हैं अगर डिफरेंट है, सेम होते तो हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं लाइक दिस, इसमें हमने ई पार्ट करा है, सेम थे डिनोमिनेटर, तो हमने बस कंपैरिजन कर दिया न्यूमरेटर का. बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, फॉर दैट यू नीड टू कैलकुलेट एलसीएम एंड देन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम. तो अब हम क्या करेंगे, 5 upon 6, इसमें हम डिनोमिनेटर 18 बनाएंगे. For that you need to multiply the denominator by 3, and if you are multiplying the denominator by 3, then you need to multiply the numerator also with the same number. So you got 15 by 18. Now make another number also. Make the denominator of second number 18. So here I will multiply by 2, and then in numerator also 6 2s are 12. So I got these two number. Now compare both these number. 15 is greater or 12 is greater? We all know that 15 is the greater number. So in this way, this means 5 upon 6
इज ग्रेटर देन 6/9 बिकॉज ये जो हमने नंबर कैलकुलेट करे हैं ये इसके इक्विवेलेंट है. क्लियर. हमें डिनोमिनेटर को सेम करना था. अब हम इसके प्लेस पे नंबर लिख देंगे कि आपका 5/6 ग्रेटर होगा किससे 6/9 से. ये तो हुआ पहला मेथड. स्टार्ट विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट द नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बट both the numbers are positive, so it is already in standard form. Now the second step is, see, this is the numerator 1 and this is numerator 2 because two numbers are given, and this is denominator 1 and this is denominator 2. So what are the steps? You need to multiply numerator 1 with denominator 2, and here below second number you need to write numerator 2 multiply by denominator 1. Is it clear? Always remember this. First numerator की multiplication हम second denominator से करेंगे और second numerator की multiplication हम denominator 1 से करेंगे. Now calculate 5 into 9. We got 45. Now here numerator second is 6 and denominator is 6. So 6 is a 36. So now just tell me which one number is greater. Here 45 is greater. So that's why 5/6 will be greater than 6/9. So in this way you need to solve the question. This is the second method, and the first method is just calculate the LCM, make the denominator equal by multiplying the same numbers and then compare the numbers. Okay, which one you feel easier you can follow that method. Okay, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं. इफ यू वांट टू लाइक टू डू दिस क्वेश्चन इन दिस मेथड you can use this also. Okay.